हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर से AIPMT 2010 एंड AIPMT 2011 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाई ए निकल surface having work function 5.01 electron volt when ultraviolet light of 200 nanometer falls on it must be 2.4 volt minus 1.2 volt minus 2.4 volt and 1.2 volt. The energy of ultraviolet light E is equal to Sc by lambda h 6.63 into 10 to the power minus 32 Planck's constant है into 3 into 10 to the power 8 C की वैल्यू और लैम्डा है 200 नैनोमीटर या 200 into 10 to the power minus 9 मीटर। सिक्स 6.63 into 3 into 10 to the power minus 34 10 to the power 8 into 10 to the power 9 divided by 200. 6.63 into 3 into 10 to the power minus 17 divided by 200 और 6.63 into 3 into 10 to the power minus 19 divided by 2 और by 2 into 10 to the power minus 19 E. This is in joule और 9945 into 10 to the power minus 19 जूल। इसको EV में कन्वर्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट E in इलेक्ट्रॉन वोल्ट 9.945 into 10 to the power minus 19 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 तो 9.99945 डिवाइड बाय 1.6 और 99.45 डिवाइड बाय 116 तो 99.45 3 4 2 1 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड Kmax is equal to E minus work function 6.21 into minus 5.01 is equal to 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर पोटेंशियल प्रोवाइडेड इज V0 कट ऑफ पोटेंशियल तो EV0 इज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और V0 इज 1.2 वोल्ट। तो जो कट ऑफ पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है दैट इज 1.2 वोल्ट। दिस D इज करेक्ट ऑप्शन। Next, when monochromatic radiation of intensity I falls on a metal surface, the number of photoelectrons and their maximum kinetic energy are N and T respectively. If the intensity of radiation is 2I, the number of emitted electrons and their maximum kinetic energy are respectively
n and 2t, 2n and t, 2n and 2t, n and t. जब इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस. देयर इज नो इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी. जो फोटो नंबर ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i. तो अगर i को हम डबल कर देंगे तो ये दिस विल बी 2n. तो फोटोन विल बी नंबर ऑफ फोटॉन्स जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर्स हैं दैट विल बी 2n. देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो करेक्ट आंसर इज बी, 2n and t. Next, in the Davison and Germer experiment, the velocity of electrons emitted from the electrons gun can be increased by increasing the filament current, decreasing the filament current, and decreasing the potential difference between the anode and filament, increasing the potential difference between the anode and the filament. So, kinetic energy, the velocity of electrons. जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करती है फोर्स एक्टिंग ऑन द या वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन और वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज इक्वल टू E इंटू potential difference between the filament and the anode. अगर हम V को इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ फिलामेंट या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज. तो दिस D इज करेक्ट ऑप्शन. Photoelectric emission. Next question, photoelectric emission occurs only when the incident light has more than a certain minimum wavelength, intensity, frequency and power. जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी डिपेंड करती है दैट इज इक्वल टू एच न्यू. जब ये जो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक होगी देयर विल बी एमिशन ऑफ electrons. So this will must be more than certain minimum frequency or threshold frequency. So this C is correct option. Electron used in a electron microscope are accelerated by voltage 25 kilovolt. If the voltage is increased to 100 kilovolt, then the de Broglie wavelength associated with the electrons would decrease by 2 times, decrease by 4 times, increase by 4 times, increase by 2 times. तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइड बाय रूट वी. पोटेंशियल डिफरेंस दिस इज एंगस्ट्रॉम. तो जो फर्स्ट केस है लैम्डा 1 इज इक्वल टू 12.27 और वोल्टेज प्रोवाइडेड 25 किलोवोल्ट या 25 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट. सेकेंड केस lambda 2 is 12.27 divided by this is 100 kilovolt
into 10 100 into 10 to the power 3 volt. ये एंगस्ट्रॉम तो lambda 2 by lambda 1 is equal to 12.27 divided by 100 into 10 to the power 3 root divided by 12.27 25 into 10 to the power 3. ये आ जाता 25 into 10 to the power 3 divided by 100 into 10 to the power 3 root is equal to 1 by 4 root 1 by 2. So lambda 2 will be half of lambda 1. तो जो डिक्रीज हो जाता है डी ब्रोगली वेवलेंथ by 2 times. This A is correct option. The threshold frequency for photosensitive metal 3.3 into 10 to the power 14 Hz. If light of frequency 8.2 into 10 to the power 14 Hz is incident on the metal, the cutoff voltage of photo emission is nearly. So h nu is equal to h nu 0 plus kinetic energy maximum. This K max is equal to h nu minus h nu 0, h nu minus nu 0 और nu की वैल्यू है 8.2 into 10 to the power 14 और nu 0 is equal to 3.3 into 10 to the power 14. 3.3 into 10 to the power 14. तो ये आ जाता है h into 9 4 into 10 to the power 14 जूल. जो प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू होती है 3.6.63 into 10 to the power minus 34 into 4.9 into 10 to the power 14. 6.63 into 4.9 into 10 to the power minus 20. K max. So this is in joule. So electron into voltage applied is equal to 6.63 4.9 into 10 to the power minus 20 और V0 is equal to 6.63 into 4.9 into 10 to the power minus 20 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. 6.6963 into 4.9 into 10 to the power minus 1 divided by 1.6. ये आ जाता है 6.63 49 27 7 8 4 2 3. So 16 or 32.481 divided by 16 or x approximately 2 volt.
जो कट ऑफ वोल्टेज होगी वो 2 वोल्ट। दिस ए इज करेक्ट ऑप्शन।